Good evening, ladies and gentlemen. In today's video, we're going to speak about the Indian education system. Now, let me ask you three very easy questions. How exactly has the Indian education system helped us? Has it made us smart thinkers? No. Did it prepare us for real life like stock, investing, mental health? Not even close. What exactly has the Indian education system done for us? All it's done is made us memory machines and not problem solvers. In this video, I'm going to give you 5 points which are really very important in life that the Indian education system doesn't contribute to. The first one is zero financial education, taxes, bonds, stock investing. How exactly has the Indian education system contributed to that in our life? It does nothing. ये सारी चीजें syllabus में missing है. Schools teach you about compound interest but don't really tell you how to use it in real life. So how exactly is it contributing in our life? Because usually when you get older and when you start making money, you're relying more on CAs to tell us what's right and what's wrong. And of course we go with that mental attitude where we're like, if we really want to figure out something in life, then we'll just go ahead and learn it. But how about we learn all these things in school so that we don't end up wasting our time learning about all these things later on when we can actually focus on building businesses and doing the other stuff. Yes, when you want to learn something, you eventually go ahead and learn and no one's complaining because I'm one of those people who's learned stuff on my own and I'm still learning. Having said that, I would be very happy if I learned about all these practical steps when I was in school. लेकिन क्या स्कूल ने हमें ये सब सिखाया? नहीं, it hasn't taught us anything. We've always been confused and every time someone talks to me about a financial concept, all I have to do is go on Google and figure out on my own. Do I not enjoy it? Of course, learning something new is obviously fun, but I wish I knew basics of it, which I don't. So the point is, it's literally not contributing in this aspect. The second one is marks वर्सेस स्किल कल्चर. जिसका सबसे ज्यादा परसेंटेज आया वो स्मार्ट है, जो कम परसेंटेज लाता है मे बी वो कोई और चीज में स्मार्ट हो सकता है, बट नहीं. यू आर गोइंग टू जज पीपल बेस्ड ऑन हाउ मच मार्क्स ही गेट्स. वी हैव ऑल ग्रोन इन अ प्लेस, और एटलीस्ट आई स्पीक अबाउट माई सेल्फ, जहाँ जिसको 90% आता था उसे बचपन में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी, उसे एक एग्जाम्पल के जैसे यूज करते थे. आवर पेरेंट्स वुड कॉन्स्टेंटली कम टू अस एंड टेल अस, लुक एट हाउ स्मार्ट ही इज. एटलीस्ट आई फेस्ड इट, नॉट दैट आई हैव गॉट एनी कंप्लेंट्स बिकॉज़ एवरीवन वांट्स देयर किड्स टू डू वेल एंड स्टफ, एंड आई वाज नेवर रियली गुड विद एकेडमिक्स, बट टू हियर समवन इज स्मार्ट जस्ट बेस्ड on the score he gets. Practical skill या creative thinking का कोई वैल्यू नहीं था. सिर्फ एग्जाम पास करो, आगे बढ़ो एंड लाइफ चलती रहेगी. एंड इसमें भी क्या नॉलेज बढ़ रही है हमारी? Are we learning anything? Do we get smarter this way? No. All we're doing is ratna. And how does that help? It doesn't make us more knowledgeable. All it does is it allows our ego and you feel good. Oh my God, I've got good percentage. Now I'm going to figure something out in life. But let me tell you, there's been a history of people who've not done good in school who ended up doing super well in life. And there's also been a history of people who've done super good in school who end up doing nothing. Obviously, this is not the case for everyone. Having said that, do we actually appreciate people who are not just interested in studying, if I may say this right, and are actually interested in learning about other things? The third one is one size fits all system. मतलब हर कोई स्टूडेंट अलग है, सबकी इंडिविजुअलिटी अलग है, everyone's different in their own way, but the syllabus is going to be the same, the studies are going to be the same. We're not being motivated to learn what we're good at. If I am good at something, I should be pushed to learn that more because I know I'm going to develop that skill and I'm going to gather that knowledge much faster compared to someone else who's not really interested in this concept or not really born with that talent to figure something out quickly. Same syllabus, same exam, same judgment. अगर यहाँ पे आइंस्टाइन होते ना तो वो भी एवरेज रह गए होते. क्यों? बिकॉज सबको एक ही वे में देखा जाता है. किसी का जो टैलेंट है कोई चीज में उसको बढ़ावा नहीं दिया जाता. इंस्टेड ऑल वी डू इज स्टडी दिस, मग दिस अप, हो गया, पास करो, एंड दिस इज एग्जैक्टली द सिस्टम फॉर एवरीवन. नाउ इन दिस केस सम पीपल माइट डू वेल एंड दोज आर यूजुअली द टॉपर्स इन आवर स्कूल. नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम देम, बट इज दिस राइट? आई डोंट थिंक सो. द फोर्थ वन इज आउटडेटेड करिकुलम. एआई का जमाना है, स्टार्टअप्स का जमाना है, बिजनेस बना रहे सब लोग. हम लोग क्या कर रहे हैं? औरंगजेब कहाँ गया था, क्लोरोफिल कैसे बनता है, ये सब का क्या करना है? और अगर ये सब सिखाना ही है तो उसके साथ ये एआई, स्टार्टअप्स, कोडिंग, ये सब के बारे में भी तो सिखाओ. Why are we not learning about all these things? Why do we have to figure this out in the future after our school? Like we're developing some sort of smartness even when we're in schools, right? How about we get at least basic learnings on these things? But instead what we do is learn geography, learn history, learn biology. Okay, but someone might be good at something and we exactly know what things are useful for kids and individuals in the future. People are making businesses. People are learning about coding. AI has become such an important thing. But is the Indian education system figuring it out? Is the Indian education system understanding that this is what we're supposed to teach our kids? How are we going to grow? Look at US, look at China. Of course, I'm not trying to say India's worse or India's bad. I'm trying to say, what is China doing? Look at the things they're trying to instill for their kids. Now, when they grow up, they already have such a big advantage compared to Indian kids. Now, what are we doing about that? We spend money on making new statues and we're constantly clapping. Oh my God. You think we're even getting tourists? This is like another topic overall. But how are we helping our kids? How are we helping India as a whole? Are we doing anything when we're just pushing them to learn like the most outdated things ever? The fifth one is no focus on mental health or real life. Anxiety, डिप्रेशन, ये सारी चीजों से गुजर रहे बच्चे.
लेकिन उनको क्या बोलते हैं, मार्क्स लेके आओ, पढ़ो और आगे बढ़ जाओ। कैसे आगे बढ़ रहे हैं? नॉलेज कहाँ बढ़ रही है? कितने सारे मूवीज भी बने इसको लेके। द बिगेस्ट एग्जांपल वुड बी थ्री इडियट्स, जहां बता रहे हैं कि क्या आपकी नॉलेज बढ़ रही है? नहीं, ऑल वी आर डूइंग इज बिकमिंग रट्टू पोपट्स। हाउ इज इट हेल्पिंग? आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो लिटरली 5 लाइन पढ़ के उसको हुबहू बोल देते हैं। उससे क्या होता है, वो लोग एग्जाम में मार्क्स लाके आते हैं। जो दूसरे बच्चे हैं जो फिगर आउट नहीं कर पाते, वो लोग एंग्जाइटी में चले जाएंगे, उनको एंग्जाइटी आएगी, उनको डिप्रेशन आएगा, अरे हम क्यों नहीं सीख पा रहे। उनका इंटरेस्ट ही नहीं है वो चीज में भाई, इसमें उनका मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हो रहा है। लेकिन स्कूल्स को फर्क पड़ रहा है, किसको भी फर्क पड़ रहा है। द टीचर्स आर कमिंग, द टीचिंग एंड गोइंग, दे गेटिंग द सैलरी। हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली डेडिकेटेड टू टीच आवर किड्स? How many parents are dedicated enough to make sure that the kids actually learn good stuff? Homeschooling is becoming such a big thing now. Of course, not everyone's getting into it, but so many rich families try to teach their kids about finance. बचपन से ही उन्हें ऐसी चीजें सिखाई जाती है जो नॉर्मल बच्चों को नहीं सिखाई जाती। That's why they already have a lead on others. What are we doing? Are we teaching them? और इससे क्या होता है, जब उनको बेसिक चीजें नहीं आती, जब वो लोग मार्क्स लेके नहीं आते, तो वो लोग एंग्जाइटी फेस करने लगते हैं, उन्हें बुरा लगने लगता है। और इसको ऐड करते हैं पेरेंट्स, जिनको लगता है कि हमने सैलरी कमा ली, हम लोग हमारे बच्चों को बेस्ट स्कूल्स में रख रहे हैं, द स्कूल्स आर डूइंग द बेस्ट दे कैन, अब बच्चे पे वो कितना आगे बढ़ेगा। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। उसका हुनर किस चीज में, ये किसको पता है? नो वन नोज अबाउट दैट, एंड हाउ मेनी पेरेंट्स आर इवन वर्किंग टुवर्ड्स दैट। एवरीवन वांट्स अ फैमिली, एवरीवन वांट्स टू हैव किड्स, बट आर यू रियली फोकसिंग ऑन व्हाट योर किड इज लर्निंग? इज ही गोइंग टू हैव एन एडवांटेज इन लाइफ, और ऑल यू आर डूइंग इज सेंडिंग हिम टू schools, sending him to the best schools, if I may say so. But how does it help? Is it helping? Are your kids becoming smarter? Do you think you're training him for the future? Training would be the wrong word. Are you preparing him well for the future? एक दो ट्यूशन लगा दोगे, सब लोग बोर्ड्स क्लियर हो जाएगा, 10th के बाद 12th आएगा, 12th के बाद 15 तक, 15 के बाद कोई दूसरा डिग्री लेते रहो। उसमें कितने लोग की नॉलेज बढ़ रही है? Some people who actually go to big business schools even end up saying like MBA is a scam. I don't want to add anything to it. You're smart enough to figure out, but how are these MBA schools treating? How are these MBA schools helping you in life? सैलरी मिल जाएगी, ऑफ कोर्स शादी के लिए लड़की मिल जाएगी, लेकिन इससे ज्यादा क्या होने वाला है? सिस्टम चेंज हो ना हो, तुम्हें अपने आप को चेंज करना होगा। You will have to understand what is the best I can do so that my kids get the best education. And when I talk about education, it's not just ratna like a popat. It's real knowledge. Think about it and comment below what you think about this video.